Hey everyone, hi. Good evening, everybody. Good evening, good evening, good evening. Can you guys quickly confirm if the audio is okay? This is the fifth lecture on probability. We are about to finish probability. Today we are going to look at selection-based probability questions that involve selection. That's nothing but combinations. Yes. So in order to understand what we are going to do here today, you need to be good with combinations. If you are not comfortable with combinations just yet, so please go ahead, watch the previous lectures where I've taught permutations and combinations. Okay. My name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer from Chennai. I have over 7 years of experience teaching quantitative aptitude, and I have trained over 2 lakh students in doing so. Please don't forget to follow #CatLiveDaily on Instagram. Hello Janvi, hi Arshan, hello Prince. Good evening guys, good evening. These are the 2 Telegram groups. If you haven't already joined them, please go ahead and do that. The links for these groups are provided in the description below, among a million other links. Okay, what have we completed so far in probability? We've seen what probability is. We have understood different types of events. We have seen complement of events and all that, right? In the second lecture we saw coin based questions. In the third lecture we saw dice based questions. Yesterday's lecture, that was lecture 4, we saw card based questions. Yes, today what we are going to do, selection based questions. Before we go ahead, please note guys, there are a lot of batches that have started and that will be starting soon. If you haven't already enrolled into one of these or many of these, please go ahead and do that. You know, you can join more than one batches also. There's no restrictions. You can also watch individual courses. If you want to take advantage of that, then you'll have to take the subscription. You can take the plus subscription by selecting any one of these packages. If you're preparing for CAT 22 and above, that is CAT 22 and other management entrance test, you can go for the 24-month package subscription. You can go for 20. If you're preparing for CAT 21 and other management entrance test, go for 12 months. If you're only preparing for CAT 21, then you can go for the 6-month package. If you are looking for a code that will give you a discount, use Surana Live to get a 10% discount. And if you take a 6-month package, you will get 1 month subscription free. Yes, if you have any more questions or queries regarding this, you can drop me a message on Telegram and I'll help you out. Let's start selection based probability. Let's understand some general information. I get some general information on selection based probability. Okay, so the sample space in such case, for example, let's say that they are asking, let's say there are 10 balls, right? There are 10 balls in total. Yes, out of which 4 of them are green and the remaining 6 are blue, right? If they're asking what is the probability of when selecting 2 balls, probability when selecting 2 balls, both are green or both are blue, whatever, right? So if we have to select 2 balls out of 10 balls, we have to select how many? 2. That basically means the sample space is going to be n of t, that is total number of available items, total number of available objects over total number of required objects. Okay, total number of required objects. This will be your sample space, right? Number of terms in the sample space. Yes. So what happens here, if I want to find out the sample space for my given condition, it is going to be out of 10 total balls, we need to select 2. So 10C2 is what? 10 into 9 by 2, which is 45. Yes. Now if they're asking that both should be green, both the balls selected should be green, then what will happen? Favorable outcomes will be number of terms that favor us, total number of available items that favor us, upon total number of required items that favor us. So out of 4 green, I want 2 green balls. Yes, that means my number of terms in the favorable outcome set is going to be out of 4 green balls, I need to select 2 green balls. Are you understanding this? So 4C2 is going to be what? 4 into 3 by 2, which is 6. So my overall probability is going to be number of terms in the favorable set upon number of terms in the sample set. So in this case, what will be the probability? Probability is going to be number of terms in the favorable set, which is 6 upon 45. Are you understanding this, guys? Hello Gaurav, hi Sneha. Good evening everyone.
quickly say yes if you've understood this, hit like on this video if you've understood this, right? So this was just a standard idea about selection based. Here there are conditions, there will be conditions put in, there will be different scenarios where you might have to bring in arrangements also, right? So we'll look at all of those using this example. Here's the first question. Hello Prince, hi Rama. Good, super Barshan, very good, very good. Gaurav, hi Akshay, good evening buddy, how are you doing now? आज दोपहर को मिले थे, I know, but still becomes my responsibility to ask. Okay, so try this question quickly. What is said in this question? It said that a card is drawn at random from a pack of 100 cards numbered 1 to 100. So there are 100 cards on which there are numbers from 1 to 100. They're asking what is the probability of drawing a number. So if you were to pick a card, what is the probability that it has less than 4 factors? Yes, less than 4 factors. Let's see if you can understand this. So this question includes not only probability and PNC, but it also includes number systems. Yes, so you have to be good with all 3 concepts in order to understand this. Yeah. Let's see if you can answer this real quick. Any answers yet? Great. Hi Karan, good evening buddy. Chalo ji, quickly try this. So you do understand what you mean by factors, right? For example, if I have a number like say 24, how many factors does 24 have? Numbers that can divide 24. 1 is divisible by 24. I mean 1 can divide 24, 2 can divide 24, 3 can divide 24, 4 can divide 24, 6 can divide 24, 8 can divide 24, 12 can divide 24, 24 can divide 24, right? So these are all called factors of the number 24. Yes, now they're asking between 1 to 100, how many numbers have less than 4 factors? What do you mean by less than 4 factors? Numbers having less than 4 factors. So not more than 3 numbers should be able to divide that kind of a number. Okay, understood everyone? So let's see if you can quickly answer this. Akshay says B, 0.3 bar. Okay, you want me to explain the question again? So Sneha, let's break it down into simpler terms. Let's say there are between numbers from 1 to 100, both included, between numbers from 1 to 100. If I were to select one number, yes, select one number, it should not have more than 3 factors. It should have less than 4 factors. मतलब क्या? It should only be divisible by one number. It should only be divisible by 2 numbers, or it could be divisible by 3 numbers, not more than that. Yes. For example, if I take a number like 25, if you take a number like 25, 25 is divisible by 1, it is divisible by 5, and it is divisible by 25. So it has how many factors? 3 factors. Are you understanding this now? Yes. Akshay says B, Arshan, Lekhna says D, Prince says B. Okay, so B, D, all right. Others, the Indian family. Hello buddy. पूरा family आया है या सिर्फ आप हो? Okay, so let's quickly try this out. Now what kind of numbers have 3 factors? आपने एक example देखा था यहाँ पे 1, 5 and 25. Yes. Other numbers like this would be what? 4. 4 के कितने factors हैं? How many numbers can divide 4? 1, 2 and 4. 9. How many numbers can divide 9? 1, 3 and 9. 25 के factors कितने? 1, 5, 25. Yes. 49 के कितने factors है? 1, 7, 49. What are these numbers, guys? Can you quickly tell me? No, Janvi, not prime numbers, but square of prime numbers. Yes, this is 2 square. This is 3 square, this is 5 square, this is 7 square, right? So after 7 square, what do you have? What is the next prime number after 7? 7 के बाद आता है 11, correct? After 7 you have 11. 11 square is 121, but will it be a part of our sample space? No.
Yes, so what do we have? We have 3 factors वाले numbers. कौन से 1, 2, 3 and 4 numbers. 4 numbers that have exactly 3 factors, no more, no less. Yes, got it. Rema, 11 will not be counted because 11 square becomes 121, जो कि 100 से ज़्यादा है. Done. 4 numbers. Now let's talk about 2 factors. What kind of numbers have only 2 factors? Exactly 2 factors. You see if I remove this part, if I remove this part from the number, what is left? Just the number and the prime number. Yes, just 1 and the prime number. If I remove this part, what is left? 1 and a prime number. So what are we basically looking for? We are basically looking for prime numbers between 1 and 100. Yes, so this is a piece of information. This is a piece of information that I would hope that you know already, but if you do not know it, it's okay. How many numbers between 1 and 100 are prime? 25 numbers, correct? Yes, so there are 25 numbers that are prime. Are you able to understand this, guys? Yeah, beautiful, very good, Janvi, superb. So number of terms having only 2 factors are what? 25 terms, and there will be nothing common between these two, right? 2 factors, 3 factors में common कुछ भी नहीं है, because here you all have perfect squares, here are only prime numbers. Yeah, how many numbers have 1 factor? Is there any number that has only 1 factor, only divisible by 1 number? Is there any number like that, guys? ऐसा कोई नंबर है क्या जो सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होता हो? वेरी गुड, जस्ट 1, राइट? 1 is divisible only by itself and no other number. So what are the total numbers here? You have 30 terms. Yes, 30 terms. So in our favorable outcome, number of favorable terms, we have 30 numbers. In the sample space, we have 100 numbers. Because we have been asked only to pick one, it is going to be 30C1 and 100C1, correct? Which is nothing but 30 and 100. So our required probability is what? Very simple. Required probability is going to be 30 by 100, which is exactly 0.3. Option B is 0.3 bar, which is nothing but 0.33333. That is 1 by 3. This is not equal to 1 by 3. This is our answer. Got it? Yes, so people who said D, if you have missed out 1, please don't do that. People who said B, you forgot that there is a bar on 0.3. Done? Everyone say yes if you've understood this. Jaldi say yes bolo, and then we'll move on to the next example. Cool, right? Beautiful, very nice. Chalo, let's move on to the next question now. Yeah, correct, Akshay. Now before we move on to the next question, guys, tomorrow at 12 p.m. tomorrow is Sunday. Tomorrow at 12 p.m. yes, for 1 hour there is a quiz. This is a free quiz wherein questions from Quant, VARC and LRDI will be tested. There is a QR code here. Don't forget to scan this QR code, or you can use the link given in the Telegram groups. Okay, if you get a rank in first 200, then you will get a scholarship for it. Yes, don't forget to use Surana live when invite code is asked. Yeah, chalo, quickly try this question now. Hi Saurabh, hello buddy. Guys, if you've joined in, if you haven't hit like yet, please kar lo. I know it sounds very please like me, but not me. You don't have to like me, you have to like the video. Okay, this is again a question that is math based. Yes, math based question. You have to be very careful when you deal with this. Math based questions can be tricky, है ना? Hi Aina. नंबर सिस्टम एकदम मिक्स किया, मतलब ओहो मजेदार तरीके से मिक्स किया उसको. तो ऐसा मिक्सिंग करने में मजा आता है ना, ऐसा सीधा सीधा नहीं करने का, मिक्सिंग करने का कभी भी. चलो क्विकली ट्राई दिस.
quick. Okay, Sneha says B, 2/9. ठीक है. Okay. Others? जल्दी. रेमा सेज बी. क्षितिज का हाथ बी पे अटक गया है. भाई हाथ उठा लो. हाथ उठा लो, वहीं पे हाथ अटक गया, निकालो हाथ वहां से. क्षितिज, ब्लॉक नहीं होना है तो ये करना बंद कर दो. वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड अक्षय. Arshan is confused. No issues, don't worry. So what are they saying? There are 9 numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 numbers are there. They're asking if they are written in a random form, right? तो sample space अपना क्या होगा? If 9 numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 numbers are arranged in random form, कितना होगा sample space? 9 factorial, correct? है ना? Done. Okay. Now let's go for the favorable outcomes. क्या बोल रहे हैं? That you need a number divisible by 4. Yes, 4 का divisibility rule क्या है? What is the divisibility rule of 4? Last 2 digits, last के जो 2 digits है, that should be divisible by 4. Yes, तो out of 7 numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Out of 9 numbers, you only care about the last 2. Yes, the other 7 numbers खसमानुखा है, right? So there are 7 numbers, 7 में से 7 कुछ होंगे तो 7 factorial arrangements होगा इसमें. Agreed? ये जो 7 numbers है उसमें 7 factorial arrangements होगा. Yes. Now we need to find out what about the last 2 digits. Yes, last 2 digits में क्या क्या होंगे, है ना? तो अब क्या करोगे यहाँ पे? Fastest way to do that, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर है, right? 9C2 possibilities है ना? 9C2 मतलब कितना? 9 into 8 by 2, 36 numbers are possible. You can't bring in all 36 numbers और फिर बैठ के आप चेक नहीं कर सकते, है कि नहीं? Yes, so what are we going to do? We know that कि अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो लास्ट नंबर तो इवन होगा. तो चलो इवन नंबर्स देखते हैं. If our last digit is 2, अगर अपना लास्ट डिजिट 2 है तो ऐसे कौन से नंबर्स है जो 4 से डिविजिबल होंगे? 12 होगा. Yes. 32 होगा. यहाँ पे 22 नहीं कंसिडर, वैसे भी 22 तो 4 से डिविजिबल है नहीं, बट 22 कंसिडर भी नहीं कर सकते बिकॉज रेपिटेशन नॉट अलाउड, है ना? रेपिटेशन ऑफ नंबर्स नॉट अलाउड. यस, सो 32 हो गया. 42 है, नहीं है. 52 है, यस. 62 है, नहीं है. 72 है, यस. 82 है, नहीं है. 92 है, यस. आ रहा समझ में? सेम वे इफ माई लास्ट डिजिट वॉज 4, यस, क्योंकि 3 से एंड होता हुआ कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा, है ना? तो अब 4 से देखेंगे. 14 है, नहीं है. 24 है, यस. 34 है, नहीं है. 44 है, यस, बट 44 इंक्लूड नहीं कर सकते. 54 है, नहीं है. 64 है, यस. 74 है, नहीं है. 84 है, यस. 94 है, नहीं है. Then what is the next number ending with 6? So what will be the numbers? 16, yes. 36, yes. 56, yes. 76, yes. 96, yes. मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, अगर आपने ये नोटिस किया हो तो इस पे मैं 4 ऐड कर रहा हूं. 12 plus 4 16, 32 plus 4 36, 52 plus 4 56, 72 plus 4 76. समझ रहे हो? यस, तो थोड़ा क्या है, थोड़ा सा आसान हो जाता है काम अपना, है ना? नाउ फॉर द लास्ट वन 8 में कौन से होंगे? 28 से स्टार्ट करो. यहां पे जो भी है उस पर 4 ऐड करो. 28, यस. 48 है, मिस मत कर देना, यस. 68, यस. 78, नो. 88, यस, बट 88 आ सकता है क्या? 88 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना.
यस, तो 88 नहीं आएगा। 98 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 96 है तो 96 के बाद सीधा 100 होगा, 98 नहीं होगा। तो कितने नंबर्स हुए, कितने नंबर्स हुए? हाउ मेनी डू वी हैव हियर? वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 and 6 16। तो यहां पे कितने पॉसिबिलिटीज है? 16 पॉसिबिलिटीज। तो टोटल अपने फेवरेबल आउटकम्स में कितने होंगे टर्म्स? 7 फैक्टोरियल इंटू 16। यस, तो अब अपना प्रोबेबिलिटी क्या है? आवर प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 7 फैक्टोरियल इंटू 16 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 9 फैक्टोरियल। यस, इसको आप क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। 7 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल अगर कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा? ऊपर तो कुछ भी नहीं बचेगा, नीचे क्या बचेगा? नीचे क्या बचेगा? 9 and 8। यस, दिस इज हाउ मच? 2 times 4 times, सॉरी 2 times 1 times, हाँ फ्लो में। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 2/9। यस, सो देयर इज 2 out of 9 chances, 2 out of 9 chances that you will have a number divisible by 4 when it comes to selecting numbers. Done? Yes, Janvi, is it clear why 44 88 को अपन ने एलिमिनेट किया है ना? चुप। सर 4 का मल्टीपल चेक करने से भी होगा। 4 का मल्टीपल्स आप बैठ के चेक करोगे, पूरा मल्टीपल्स लिखोगे और फिर चेक करोगे। 4 के सारे मल्टीपल्स लिख के फिर चेक करना थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा? यू कैन डू दिस डायरेक्टली ऑल्सो, आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट क्योंकि ये मैथ बेस्ड है थोड़ा सा रिस्की है ना? क्योंकि ये मैथ बेस्ड है थोड़ा सा रिस्की है, तो ध्यान से करना। बट ठीक है, डन गाइस। इसमें कोई भी डाउट आपको, किसी को? नहीं? चलेंगे नेक्स्ट। चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब ध्यान से पढ़ना, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। यहां पे प्योरली कॉम्बिनेशन यूज होगा। यस, बट डोंट मेक अ मिस्टेक व्हेन यू रीड दिस, ओके? तो क्या बोला गया है? 6 people entered the elevator in the basement of a 10-floor building. Suppose that each of them independently and with equal probability can leave the elevator at any floor beginning with the first फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 10th फ्लोर तक सबका प्रोबेबिलिटी सेम है कि कोई एक फ्लोर पे उतर जाए। दे आर आस्किंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 6 people लिविंग एट डिफरेंट फ्लोर्स। सारे जो 10 लोग हैं, सारे जो 6 लोग हैं वो अलग अलग फ्लोर्स पे उतरेंगे, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। यस, क्लियर? करो ट्राई जल्दी से। हाँ भाई, एनी आंसर्स? So there are 6 people, right? Person 1, person 2, person 3, person 4, person 5 and person 6. Saurabh and Rishabh are saying C. Saurabh and Rishabh are saying C. How about others? Quickly try. Let's see if you can answer this. Arshan says 10C6 by 10C6 by what?
बाई के बाद भी तो बोलो बाई के बाद भी तो बोलो, बाई पे आके रुक गए। हाँ भाई, एनीवन? सॉरी, हाँ। Janvi says B, 10p6 by 10 to the power 10. Okay. Ajay, yes, elevator has nothing to do with people getting off. Let's assume that elevator is a non-stop, non-ending event. Elevator moving from all the 10 floors is non-ending event. चलते जा रहा है, it's keep on going on. Janvi is saying B, Balram is saying B. Okay, so let's try this out, shall we? Okay, first let's look at this. Let's talk about sample space of each of these people, because the probability is independent. Because the probability is independent, that means probability of first person getting off on any floor will not affect the others. Yes, तो sample space क्या होगा? First guy के पास there are 10 options, किसी पे भी उतर सकता है. Second guy के पास 10 options, किसी पे भी उतर सकता है, 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 किसी पे भी उतर सकता है. Right? Agreed? Yes. Okay. So what is the total sample space? Sample space क्या हो गया? 10 to the power 6. All right. Now let's look at them and them getting off at floors which are different from each other. Yes, different from each other. मतलब पहला बंदा, when the first guy gets off, yes, when the first guy gets off, he has how many options? जब पहला बंदा उतरने जा रहा है, let's say बाकी सारे 6 लोग elevators में, right? All 6 people are in the elevators. Yes. If all 6 people are in the elevator, how many options does the first guy have? He has how many options? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Any of that one floor, 1 out of 10 floors he can get off it, right? So for the first guy there are 10 options. Now because they're saying that all people should get down at different floor, can the second guy get down at the same floor that the first guy did? Let's assume the first guy got out at the 4th floor. Can the second guy also get down at the 4th floor? No. That means one option reduces because no duplication allowed. Same way here, another one option will reduce, another one option reduce, another one. Yes, I sound like DJ Khalid. Another one. We the best music. Okay. So what is this? 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5. Yes, so if you want to keep it the way it is, keep it the way it is. Directly calculate the probability. What will be the probability at different floors? Yes, it's going to be total number of terms in the favorable outcomes, which is this much, upon total terms in the sample space. Yes, this पे आप what could you do? Write it as 10 into 10 into 10 to the power 4. Make it a little simple. 8 10 cancel, 8 5 8 2 cancel. This becomes 4. So now all you have to do is calculate how much is 9 into 6 into 7 into 4 over 10 to the power 4. Yes, how much is this? This is 1512 by 10 to the power 4, which is option C. Got it? Balram, so the confusion that you have is rectified when they said starting with the first. So it doesn't matter whether there's a ground floor, whether there's a basement, whether there's a parking under it, P1, T1, T1, P1 जो भी है, doesn't matter. Yes, you are asking a doubt as if sir ये जो situation है क्या ये American based country में है या English based country में, British based country? Because English people have something called the ground floor. Yes. But Americans don't have anything called the ground floor. उनका पहला floor ही first floor होता है.
समझ रहे हो? डन। चलो ये वाला ज्ञान अपन बाद में ठोकेंगे, पहले लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? दिस वन, नो इश्यूज बलराम. चलो, ब्यूटिफुल. सो एवरीबडी हु सेड ऑप्शन सी, वेरी नाइस, वेरी गुड. अक्षय, वेरी गुड. Arshan said option C, but then had a different choice over there, but okay, chalega. Saurabh said C, Rishabh said C. Beautiful. Chalo, let's move on to the next question. Okay, before we move on to the next question, there is a free feature available on the Unacademy learning app which everyone can take use of, right? It's called the ask a doubt feature, जहाँ पे आपके पास जो भी doubt हो, if you click on ask a doubt, you can upload the picture, ask the doubt directly, and you will get a solution, right? You can download the Unacademy learning app and register under Surana Life का referral code. Okay? चलो, try this. Read this question carefully. ये काफी interesting है. This is also an interesting question. Yes. If 3 small squares are chosen at random from a 8x8 chessboard, अगर 8x8 ना भी बोले तो भी हमें पता है कि chessboard में 8x8 squares होते हैं, right? They're asking what are the chances that they will be aligned diagonally, है ना? They will be aligned what? Diagonally. कोई भी 3 अगर चूज करे तो वो एक डायगोनल फॉर्म होने चाहिए, मतलब डायगोनल में रहेंगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. अगर नहीं समझ में आया तो चलो मैं डायग्राम लगा के समझा देता हूं. ये आपका चेस बोर्ड, ये आपका चेस बोर्ड है 8x8, है ना? तब ये क्या बोल रहे हैं कि इफ देयर आर 3 स्क्वायर सेलेक्टेड, लेट्स से इफ आई सेलेक्ट दिस 1, 2 and 3, these 3 squares should form a diagonal as a edge to edge. Yes, so this is accepted. What is not accepted or what is not in the favorable outcome? 1, 2, 3 not in the favorable outcome. 1, 2, 3 not in the favorable outcome. Okay, they should form a diagonal. Is it clear now? Chalo, let's see who can answer this. Okay, Saurabh says B, 3 out of 744. ठीक है Saurabh. Others? जल्दी. Rama says B, Ajay says B, Arshan says B, Rishabh says A. Okay, Rishabh A बोल रहे हैं. Saurabh, Arshan, Ajay, Divya, Rama, Akshay are saying B. Sneha says C. Okay. Okay. Done. चलो दोबारा से we'll have a look at the chessboard. Right? Let's have a look at the chessboard. Now they basically asking if 3 के ग्रुप्स बनाते हैं 8x8 64 स्क्वायर्स है, करेक्ट? 8x8 कितने स्क्वायर्स है? 64 स्क्वायर्स है. उसमें से अगर 3 के ग्रुप बनाते हैं, इफ वी मेक ग्रुप्स ऑफ 3 ईच, यस 3 के अगर ग्रुप्स बनाते हैं तो कितने ग्रुप्स डायगोनल में रहेंगे, राइट? हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी ऑन अ डायगोनल. या तो अभी अपन क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स कैलकुलेट द सैंपल स्पेस. उसको तो खत्म करते हैं, राइट? नक्की करते हैं. सैंपल स्पेस विल बी व्हाट? एक सेकेंड ना. या सैंपल स्पेस विल बी व्हाट? आउट ऑफ 64 स्क्वायर्स यू आर सेलेक्टिंग 3. Yes, out of 64 squares you're selecting 3, which is what? 64 into 63 into 62 by 1 into 2 into 3. Yes,
इसको आप कैलकुलेटर में करना चाहे कर लो, मैनुअली करना चाहे कर लो, राइट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद द कैलकुलेशन. दिस विल बी हाउ मच? 41,664 है ना. एक बार चेक कर लो जल्दी से. 64 into 63 into 62 divided by 6 is 41,664 cents बन गया. ठीक है, वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन. यस, एटलीस्ट अपना डिनोमिनेटर तो सही रहेगा भाई. बाकी का होगा नहीं होगा डिनोमिनेटर तो सही रहेगा. ठीक है. नाउ व्हाट डू वी डू? वी स्टार्ट काउंटिंग डायगोनल्स. नाउ यू कांट सेलेक्ट रैंडम डायगोनल्स. आप कोई रैंडम ऐसे एम पड़े डायगोनल्स को नहीं उठा सकते, राइट. व्हाट विल यू नीड? यू विल नीड डायगोनल्स जहां पे एटलीस्ट 3 स्क्वायर्स अवेलेबल हो. क्या मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूं? कैन आई सेलेक्ट दिस? ये वाला स्क्वायर सेलेक्ट हो सकता है क्या? इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन वी आर चेकिंग. यस, इन दिस डायरेक्शन वी आर चेकिंग. कैन आई सेलेक्ट दिस? नो. कैन आई सेलेक्ट दीज? नो. यस, सो आवर फर्स्ट डायगोनल इटसेल्फ विल बी व्हाट? दिस वन, है ना. ये होगा अपना पहला डायगोनल. लेट्स कॉल इट D1. मेक सेंस गाइस? डन या ओके. इसको D1 बुलाएंगे, ये अपना D1 है. ठीक है. इसके बाद क्या? नेक्स्ट D2. क्या होगा? ये वाला डायगोनल. दिस इज आर D2. यस, रेड में जो है वो क्या है? D2. सेकेंड. ये क्या हो गया भाई? इतना मुश्किल से तो सीधा लाइन बनाया था, मिटा दिए. डन. नेक्स्ट व्हाट वुड यू हैव? You would have this diagonal 1 2 3 4 5 6 है ना. 6 वाला डायगोनल. यस, देन दिस इज D3. ऐसे करके आप एंड तक जाने की जरूरत नहीं. यू डोंट हैव टू गो ऑल द वे टिल एंड. यस, ये समझ लो कि आपको लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि एट वन स्टेज पूरा रिपीट होने लग जाएगा. दिस इज आर D4 है ना. ये क्या हो जाएगा? D4. तो अपना D4 ये रहा. एंड वी विल हैव D5. क्या कलर यूज करें? इंकी पिंकी पोंकी सब कलर आ गए क्या? चलो ये यूज कर लेते हैं. दिस इज आर D5. यस, D5. इसके बाद क्या होंगे? इसके बाद सारे रिपीट होंगे, राइट. 8 वाला रहेगा, ये बड़ा वाला रहेगा. यस, बाकी के सारे रिपीट होंगे. तो बड़ा वाला अलग से करेंगे. यहां से लेके यहां से जो डायगोनल है बड़ा वाला, उसको अलग से करो. बाकी सारे डुप्लीकेट है ना. यस और नो? बाकी सारे डुप्लीकेट है, राइट. कैसे? ये वाला सेम D1 के जैसा होगा. यस, ये वाला सेम D2 के जैसा होगा. ये वाला सेम D3 के जैसा होगा. ये प्राइड मंथ है इसलिए इतने कलर्स यूज नहीं कर रहा हूं. ये जरूरी है समझाने के लिए, इसलिए इतने कलर्स यूज कर रहा हूं. ओके. ये आपका D4 होगा और ये आपका D5 होगा, है ना. डुप्लीकेट है. एग्रीड? यस. तो चलो पहले D1 का देख लेते हैं. D1 का सीन देख लेते हैं. D1 के सीन में क्या होगा? D1 में देर आर 3 स्क्वायर्स. 1 2 3 3 स्क्वायर्स. उसमें से मेरे को 3 सेलेक्ट करना है. 3C3 इज हाउ मच? 1. यस, 3C3 इज हाउ मच? 1. अभी के लिए इतना कर लो. यस. उसके बाद क्या? डुप्लीकेट है. ऐसा एक और है, राइट. D3 यहां पे भी है, यहां पे भी है. सो इंटू 2. यस, सेम वे क्या हो रहा है? D3 यहां पे भी होगा ना. एक D3 यहां पे भी होगा, राइट गाइस. दिस इज ऑल्सो D3. दिस इज ऑल्सो D3. यस, तो क्या हो गया? और 2 है. सो हाउ मेनी? 4 सच पॉसिबिलिटीज हियर. डन. नाउ लेट्स गो फॉर D2. ये आ रहा है ना समझ में? ये बहुत जरूरी है. D1 अगर समझ गए तो बाकी हो जाएगा. D1 जो अगर आ गया तो समझ में आ जाएगा बाकी का, है ना. D2 देखते हैं. अब D2 का कितना सीन है? D2 में कितने? 4 स्क्वायर्स, आउट ऑफ विच वी आर सेलेक्टिंग 3. ये का डबल ये का डबल नहीं, ये अनुराधा की बहन. नो 4C3 कितना? 4. यस, बट बिकॉज देर इज 2 in the same direction, 2 in the other direction, तो कितना हो गया? 4 into 4 16, राइट. आ रहा है समझ में? D3 में कितने स्क्वायर से? ग्रीन वाले में 1 2 3 4 5. तो 5C3 हो गया. ये
5c3 is the same as 5c2 which is 5 into 4 by 2 10. यहां पे भी क्या होगा into 2 into 2 आ रहा समझ में 40. ऐसे ही आप क्या करोगे D4 का भी करो. D4 क्या कलर है येलो कलर. ये अगर नहीं दिख रहा है तो इट्स टाइम यू चेंज योर फ्रेंड्स. ये ऐसा एक इंस्टाग्राम पोस्ट था. हाउ मच इज 6c3 6 into 5 into 4 by 6 which is 5 into 4 20. सेम थिंग यहां पे भी 20 into 2 into 2 कितना हो गया 20 into 4 80. D5 का क्या सीन होगा D5 में कितने 7c3 which is 7 into 6 into 5 by 6. तो 6 और 6 कैंसिल हो गए. क्या बचता है 35. 35 into 2 into 2 35 into 4 कितना 140. यहां तक क्लियर है. यहां तक कोई डाउट है किसी को. एनीबडी इज गॉट एनी डाउट्स हियर गाइस. ठीक है. दिव्या 3c3 क्योंकि D1 पहला ये ब्लू वाला D1 है राइट. D1 में कितने स्क्वायर्स अवेलेबल है 1 2 3. अपने को कितने सेलेक्ट करने हैं पूरे 3. इसीलिए 3c3 दिस इज 1. यस. तो फर्स्ट 5 डायगोनल्स का हो गया. अब कौन बचता है बाप ऑफ ऑल डायगोनल्स राइट. बड़ा वाला. यस बड़ा वाला डायगोनल है ना. बड़ा वाला डायगोनल का क्या सीन होगा बिगेस्ट डायगोनल. लेट्स से डायगोनल बिग बड़ा डायगोनल. यस उस पे कितने हैं 8 स्क्वायर्स है. उसमें से हमें 3 सेलेक्ट करना है राइट. 8c3 इज हाउ मच 8 into 7 into 6 by 6 8 into 7 56. यस. अब 56 में भी क्या होगा गाइस 56 में भी क्या होगा. अब बड़ा वाला जो है सिर्फ 2 ही बार रिपीट होता है ना. देखो मैं हाइलाइटर यूज करके बता रहा हूं. बड़ा वाला जो है बिग डायगोनल ये नहीं आ रहा है क्या. ये हो रहा है हाईलाइट समझ में आ रहा है. ये एक हो गया डायगोनल. ये हो गया दूसरा डायगोनल. आ रहा समझ में. 2 ही डायगोनल है 4 नहीं है. बाकी केसेस में 4 4 है. इसमें सिर्फ 2 ही है. सो into 2 इसीलिए इसको मैंने अलग कर दिया था. ठीक है. ये अच्छा एक सेकेंड गाइज आप लोगों को दिख तो रहा है ना. मेरे को वो आदत हो गया राइट साइड में कैलकुलेशन करने का. आई होप यू आर एबल टू सी दिस. सो 56 into 2 इज हाउ मच 100 plus 12 112. डन. ये मेरे को पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन करते करते मेरा तो हो जाए मेरा तो पेड़ा पार हो जाएगा सर. आप क्या कर रहे हो. यस. तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने इन सब का सम 4 plus 16 plus 40 plus 80 plus 140 plus 112 which is going to be 392. अपना टोटल सैंपल स्पेस कितना था 41,664. तो अपना प्रोबेबिलिटी क्या होगा 392 by 41,664. समझ गए. इसको अगर आप कैंसिल करोगे दिस इज 7 times दिस इज 744 times. So what's your probability 7 out of 744 cases which is option A. Done. जिन्होंने भी B बोला है कोई डाउट है इसमें गाइस किसी को. कछु डाउट है तो पूछ लेना. अगर डाउट नहीं है तो लाइक कर देना वीडियो को. यस. यस नेहा. इन कैट यू आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर. कैट में कैलकुलेटर है बट बाकी एग्जाम्स में नहीं होगा. बाकी एग्जाम्स में नहीं होता है. कोई नहीं अर्शान कोई नहीं. अगर गलत हो गया तो कोई इश्यू नहीं है. पहले अटेम्प्ट में नॉर्मली होता है बट अब जब आपको ये रियलाइज हो गया कि हमें क्या चाहिए क्या पूछा गया और क्या चाहिए वंस यू रियलाइज दैट उसके बाद सब पीस ऑफ केक है. ठीक है. वो तो होना ही है अक्षय वो तो क्वेश्चन पढ़ने पे ही समझ जाना चाहिए कि ना ये हमसे ना हो पाएगा है ना. Done. Sir, I tried like the way that after every 9 diagonal will be formed. After every 9 squares क्या? After every 9 squares you mean?
एवरी 9 स्क्वायर्स नहीं कर सकते ना, हाँ कर सकते हो वैसे 9 9 9, बट प्रॉब्लम यह है कि डायगोनल सिर्फ यहां से नहीं, डायगोनल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ऑल्सो, इट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, हियर ऑल्सो, यस हियर ऑल्सो। टेक्निकली यहां से इस डायरेक्शन में है, यहां पे इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आई थिंक दैट विल बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग, या डन गाइस। सो इस क्वेश्चन का सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है। अब इसमें आप जुगाड़ निकाल लो, अगर आपके पास निकालने के लिए कुछ है, मतलब जुगाड़ निकालने के लिए आइडिया है तो करो वो ट्राई, अदरवाइज ये हो गया अपना क्वेश्चन खत्म। ये देखो रंगोली बनाई है मस्त, कोई इसको NFT करके बेच दो भाई, NFT बना के बेच दो, बेच दे इस रंगोली को। अरशान गोल तो वही है, एम तो वही है, कोई इसका NFT बना के बेच दो, जो भी आएगा आधा आधा कर लेंगे, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस। जल्दी करो ये वाला कोशिश, ये बहुत ही सिंपल, अरे ये बहुत कतई सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। इसमें से एक आंसर चॉइस में मेरा फोन नंबर है। इसमें से एक आंसर चॉइस में मेरा फोन नंबर है, यू डिसाइड कौन सा हो सकता है। ट्राई मत करना कॉल करके। हाँ भाई, कहाँ रह गए? क्वेश्चन समझा देता हूं, आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। टोटल ऑफ 100 शर्ट्स, यस टोटल ऑफ 100 शर्ट्स, इसमें से 10 शर्ट्स जो है 10 शर्ट्स आर डैमेज्ड, रिमेनिंग 90 आर नॉट डैमेज्ड। यस दे सेइंग अगर रैंडमली 8 शर्ट्स का डिलीवरी जाता है, 8 शर्ट्स की डिलीवरी अगर जाती है, यस तो इसमें से यू शुड हैव एटलीस्ट 1 डैमेज्ड शर्ट। यस एटलीस्ट एक इसमें से डैमेज निकलना ही चाहिए, एटलीस्ट। यस Akshay says C. Akshay says the answer is option C. Rishabh says C. Ajay says B. C using elimination. Okay. Lekhna says C. Okay. Adarsh. सी का आप कैलकुलेशन चेक कर लो एक बारी, सी का कैलकुलेशन जो है चेक कर लो, क्योंकि सबसे वियर्ड नंबर है तो उसका मतलब ये नहीं कि यही आंसर रहेगा। है ना, अगर ये क्योंकि सर ये सबसे दिखने में अजीबोगरीब वही ऑप्शन है, तो मेरे को तो लगता है वही होगा, जरूरी नहीं है, प्लीज बी केयरफुल। चलो ओके, सो वी हैव ऑप्शंस सेलेक्टेड बी, सेलेक्टेड सी, कोई ए और डी की तरफ भी नहीं जा रहा। चलो ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस हाउ शुड वी एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन? अगर आउट ऑफ 8 1 इज डैमेज्ड, आउट ऑफ 8 1 इज डैमेज्ड, देन 7 शुड बी नॉट डैमेज्ड, करेक्ट? यस, तो इसमें क्या होगा, 1 डैमेज सेलेक्ट करने के लिए 10 में से 1 सेलेक्ट करेंगे, एंड 7 में से कितने सेलेक्ट करेंगे, सॉरी 90 में से कितने सेलेक्ट करेंगे, 7।
यस, सेम वे अगर 2 डैमेज्ड है और 6 नॉट डैमेज्ड है, क्योंकि 8 शर्ट्स है ना, 2 डैमेज्ड है 6 नॉट डैमेज, तो 10 में से 2 सेलेक्ट करेंगे, 90 नॉट डैमेज में से 6 सेलेक्ट करेंगे। ऐसे करना है आपको, कब तक, जब तक है जान, कब तक, जब तक आप पूरे 8 शर्ट जो है, ऑल 8 शर्ट्स आर डैमेज्ड एंड 0 आर नॉट डैमेज्ड। यस, दैट इज 10C8 into 90C0। एग्रीड एवरीवन? ये क्या होगा आपका न्यूमरेटर, आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, सैंपल स्पेस विल बी व्हाट, आउट ऑफ 100 शर्ट्स यू आर सेलेक्टिंग 8। यस, ये करते करते क्या हो जाएगा, शर्ट भले डैमेज्ड हो या ना हो, आप डैमेज हो जाओगे, आप डैमेज हो जाओगे। सो व्हाट विल वी डू, विल गो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट, राइट? Probability of at least one damaged is equal to total, yes, total minus not damaged. Agreed? Total minus not damaged by sample space. Sample space क्या है अपना 100C8. Agreed? या फिर इसको अलग कर लो 1 by, यस, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस नॉट डैमेज्ड बाय 100C8, यस, विच इज व्हाट 1 माइनस 0 डैमेज शर्ट्स, नो डैमेज शर्ट्स, मतलब जितने भी शर्ट्स, जितने भी 8 शर्ट्स निकाल रहे, इट हैज टू बी फ्रॉम दीज 90 नॉन डैमेज शर्ट्स बाय 100C8। यस, now you know that it is not option A for sure, you know that it is not option B, eliminate। option C जिन्होंने भी बोला है आलस खा के, जिन्होंने भी option C बोला है आलस खा के बोला है, yes, आलस खा के, ऐसे नहीं कि लॉजिक लगा के, नंबर ऑफ डिजिट्स देखो पता चल जाएगा। Here you have 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स आपके डिनोमिनेटर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स आपके न्यूमरेटर में है। आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी है, पीपल हु सेलेक्टेड ऑप्शन सी, आपका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1। मतलब यार सेइंग सर कि 100% से भी ज्यादा 100% होता तो भी एक बार के लिए मैं मान लेता, आप बोल रहे हो कि सर 100 नहीं, 100 से भी ज्यादा 200 से भी ज्यादा, ये डबल से भी ज्यादा है। अरे भाई सर 300 से 400% से भी ज्यादा, ये आपका जो आंसर है जिन्होंने सी सेलेक्ट किया उनका 400% से भी ज्यादा है। इतना क्वालिटी कंट्रोल किसी को नहीं करना है भाई, इतना क्वालिटी कंट्रोल कौन करता है जहां पे प्रोबेबिलिटी 400 से भी ज्यादा हो। ये तो अमेज़न का उल्टा हो गया ये तो अमेज़न का उल्टा हो गया कि सर जो भी सामान भेजेंगे सब में हम विम बार ही भेजेंगे, सब में हम ईंटें भेजेंगे, सब में पार्ले जी बिस्कुट भेजेंगे तो गलत हो गया गाइस, you have to be very very careful, okay? Modern math requires modern solutions, okay? और ये अच्छा वाला भी ट्रैप नहीं, ये ऐसा नहीं है कि चलो इंटेलेक्चुअल ट्रैप है वहां सर, मतलब इतना सोच समझ के आपने ट्रैप, मैंने आंखें बंद करी ऐसे रैंडम 8 नंबर डाल दिए so your answer is actually none of the above, okay? ठीक है, तो बटनवा दबाने के पहले जो है 10 बार सोचे 10 बार सोचे, समझे कि करना है नहीं करना है, नहीं करना है जाने दो, ये क्वेश्चन नहीं करना है जाने दो, आपको एटलीस्ट नेगेटिव मार्क तो नहीं मिलेगा, ऐसे गंदा वाला ट्रैप करके मत करो। तो जिन्होंने सी सेलेक्ट किया उनसे तो 1000 गुना अच्छे हैं जिन्होंने बी या ए सेलेक्ट किया था उन्होंने एटलीस्ट सोचा कि हाँ चलो लॉजिकल तो लग रहा है ये आंसर चॉइस अंडरस्टूड अजीब गाइस हो यार आप लोग। चलो, so this is the end of the session. I hope you enjoyed. I hope you liked these questions. Yes.
towards the end I'd like you to know कि plus subscription ले लो guys. ऐसे बहुत सारे questions हम plus में भी करते हैं. Plus subscription ले लो. You can take any of these subscription packages. If you take 6 months package, you will get 1 month का free. Yes. And if you use Surana Live तो आपको मिलेगा 10% discount और मेरे को मिलेगा आपका ढेर सारा प्यार. Yes. And you can also go for iconic subscription that gives you all the advantage that Plus gives you, all unlimited access to every content. Yes, whether it's live, recorded, PDFs, quizzes, tests, mock test, previous year questions, sessions on GD, PI, WAT sessions, not just for CAT but for other exams also. तो आपको Plus में वो सब मिलेगा, but उससे ऊपर you will get a personal mentor assigned to you who will help you with everything, be it for applications, be it for plan, be it for a schedule, be it for academic doubts, be it for profile based doubts, आपका GD, PI, everything your mentor will take care of. Yes, these mentors are not just educators, these are also alumni of top B schools who will help you understand what you're supposed to do and what you are not. Yes. There are 2 packages, subscription packages available, 24 and 12 months. You can use the code Surana Live. That will give you a 10% discount. Yes. दोबारा से बेसिक कर लो एक बार. हाँ, दोबारा से बेसिक करो, दोबारा से ये क्वेश्चंस ट्राई करो. प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस अगेन. ओके. यस. डन. Thank you so much guys. Don't forget to hit like on this video. Do not forget to subscribe to this channel. I will see you tomorrow. Tomorrow we will be seeing at 3 p.m. we will be seeing some more concepts of triangles. Yes, advanced concepts of triangles. Yes, so please be there. Yeah. Thank you so much. Have a great day ahead. I'll see you tomorrow. Until then, keep yourself safe. Keep yourselves happy. Saturday night hai, jao chill karo. Bye bye. Keep learning. Let's crack it.